Is your child smart, curious, and imaginative, but struggles to read or write? You might have wondered, why does this happen and how can I help? Welcome to Crossroads Samita E Academy, where learning meets understanding. In today's video, we are diving deep into dyslexia, one of the most common yet misunderstood learning concerns. In this video, let's try and understand what is dyslexia, causes for the same, signs in children, and interventions to help the person overcome the same. Now, let's watch a small movie clip to understand dyslexia better. ये बी की जगह डी तो डी की जगह बी, एक जैसे दिखने वाले अक्षरों के बीच में कंफ्यूजन। और ये एस और आर उल्टा लिखा है, बल्कि कई सारे अक्षर उल्टे लिखे। ये देखिए, ये छोटा एच, छोटा टी, देखा? मिरर इमेज। एनिमल एनिमल एनिमल, एक ही पेज पे तीन अलग अलग स्पेलिंग। इसका मतलब कोई एक गलत स्पेलिंग उसे याद है, ऐसा नहीं। दूसरी बात, एक जैसे शब्दों को मिक्सअप करता है। ये टीओपी टॉप बन गया पीओटी पॉट, SOLID सॉलिड बन गया SOILD सॉलिड। क्यों करते हो ऐसा? बेवकूफ है, आलसी है ना। मेरी समझ से उसे अक्षर पहचानने में दिक्कत हो रही है। जब आप APPLE एप्पल पढ़ती है तो आप अपने दिमाग में एक लाल लाल एप्पल बना लेती है। ईशान वो एप्पल पढ़ ही नहीं पाता, शायद इसलिए मतलब नहीं समझ पाता। पढ़ने लिखने के लिए अक्षरों की आवाज, उनकी बनावट, शब्दों का मतलब समझना जरूरी है। ये अहम जरूरत ईशान पूरी नहीं कर पा रहा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बहाने हैं पढ़ाई टालने के। जरा ये पढ़िए मिस्टर अवस्थी। ये कैसे पढ़ सकता हूं मैं? ये तो चाइनीज में है। अरे कोशिश तो कीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। क्या बेकार की बात कर रहे हैं? मैं कैसे पढ़ सकता हूँ आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपका रवैया ठीक नहीं है। ये आप शैतानी कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही कैफियत होती होगी ईशान की, अक्षर ही समझ में नहीं आते होंगे। इस पढ़ने लिखने की तकलीफ को डिसलेक्सिया कहते हैं। कभी कभी बच्चे को डिसलेक्सिया के साथ साथ और भी तकलीफें हो सकती हैं, जैसे कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन समझने में दिक्कत, टर्न टू पेज 65, चैप्टर 9, पैरा 4, लाइन 2, कंफ्यूजन, या फिर पुअर फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। क्या ईशान को अपने शर्ट के बटन या जूते की लेस बांधने में तकलीफ होती है? हाँ। योहान, जब तुम उसकी तरफ बॉल फेंकते हो, क्या वो पकड़ पाता है? वो बॉल को कभी जज ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो साइज, डिस्टेंस और स्पीड, इन तीनों को एक साथ समझ ही नहीं पाता। कितनी बड़ी बॉल कितनी दूर से कितनी तेज आ रही है, जब तक वो जान ले, गाड़ी छोड़ जाती है। जरा सोचिए, एक बच्चा महज 8 या 9 साल का, पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता, रोजमर्रा के मामूली काम नहीं कर पाता, वो सारी चीजें नहीं कर पाता जो उसकी उम्र के बच्चे बड़ी आसानी से कर लेते हैं। क्या बीतती होगी उस पर? उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ जाती होंगी। अपनी खामियों को टेढ़ेपन के लिबास में लपेटकर दुनिया से लड़ता होगा हर रोज, गदर मचाता होगा, गदर। यहां क्यों बताऊं दुनिया को कि नहीं आता, नहीं करना क्या कि टाल नहीं दो? बड़ों से तो सीखते हैं बच्चे। अब तो ये गदर भी कुचल दिया गया है वहां। मुझे अफसोस है, उसने पेंटिंग करना बंद कर दिया। बड़े दुख की बात है। लेकिन ईशान ही क्यों? इसका कोई जवाब नहीं है। इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, किसी को भी हो सकता है, कभी कभी जेनेटिक भी होता है। आम आदमी की ज़बान में कहूँ तो
ब्रेन में जरा सी वायरिंग की प्रॉब्लम है बस. Dyslexia is a learning disorder that affects a person's ability to read, write, spell, and even process language. It's not about intelligence or laziness. In fact, many individuals with dyslexia are highly creative, analytical, and think in powerful visual ways. The challenge lies in how the brain processes written symbols. In dyslexia, this language processing part of the brain works differently. Therefore, dyslexia is not low intelligence. Dyslexia, rather, is a different way of processing language. So, why does dyslexia occur? Here are the main contributing factors. It could be genetic in nature. Dyslexia often runs in families. If a parent or sibling has it, a child may have a higher chance of being dyslexic. Brain differences. Neuroimaging shows that the brain areas that handle reading and language work differently in people with dyslexia. Early development factors. Children who experience delays in language development or are born prematurely may be at higher risk. Environmental gaps. Limited early exposure to books, stories, and reading aloud can also contribute to this factor. Hence, let's remember dyslexia is not caused by poor teaching or lack of effort from the child or by low intelligence. Recognizing the signs early is critical. Let's look at how dyslexia appears at different stages. In preschool age or the preschool years, one can observe there could be trouble learning letters and sounds. There could be a delay in speech development, difficulty in rhyming, trouble learning nursery rhymes or letter names. During primary schooling, the child might struggle with letter sound relationship, confuses similar looking letters like B, D, P, Q, etc., reads slowly or hesitantly, difficulty reading out loud, hence avoids reading. In older children, one might observe poor spellings, lot of spelling mistakes, handwriting might not be very legible, difficulty organizing written work, low self esteem around schoolwork. Now that we know what is dyslexia, causes for the same, and common signs to identify children with dyslexia. Now, the most important part, how to support the child or individual dyslexia so that they can emerge successfully in their journey of learning and academics. Early intervention is the key for this. The earlier dyslexia is identified, the more effective the support can be. Specialized teaching methods. Multisensory structured language teaching works best. That is, visual, auditory, and kinesthetic learning combined together. One can try with various visual stimulus books, flashcards, word building toys, play sand or clay to help them trace and form letters and words. Create phonological awareness in the child. Technological aids. Use tools like text to speech software, audiobooks, and dyslexic friendly fonts to reduce the pressure of traditional reading. Build on strengths. Children with dyslexia often excel in areas like problem solving, storytelling, art, and innovation. Help them discover and celebrate their gifts. Emotional support matters. Encourage the child's effort over perfection. Remind them they are not broken. Their brain just works differently, and that's okay.
Many successful individuals, from entrepreneurs to authors, have dyslexia. To name a few, Agatha Christie, Albert Einstein, Whoopi Goldberg, Steve Jobs are just a few. With the right support and belief in themselves, children with dyslexia can do amazing things. Let's quickly recap what we have learned today. Here are a few key takeaways. If you found this video helpful, please give it a thumbs up, subscribe to Crossroads Samita E-Academy channel and share it with parents and teachers who need this information. Let's create a world where every child, regardless of how they learn, gets a chance to shine. Thanks for watching our video. Have a great day.